महिंद्रा की XUV700 ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो गई है अराउंड $40,000 के प्राइस में। और ऑस्ट्रेलियंस का काफी डिफरेंट ओपिनियंस है इस गाड़ी को लेके। It's not a great name. तो देखते हैं भाई क्या क्या ये लोग कहते हैं हमारी कार्स के बारे में और कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाली वीडियो है कार सॉस की, ये महिंद्रा XUV700 की है। देखते हैं भाई इनका क्या कहना है हमारी गाड़ी को लेके। Alrighty guys, this one surprised me. If you're thinking, what the heck is that? You're not alone. This is the Mahindra XUV700 AX7L. And yeah, it's not a great name, but भाई ये कौन होते हैं हमारी गाड़ी के बारे में बोलने वाले कि अच्छा नाम नहीं है। भाई तुम्हारे चाइनीज नाम अच्छे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बिकते हैं, ऐसे पूरा कॉन्कर कर लिया ऑस्ट्रेलियन मार्केट को। BYD या फिर चेरी वेरी बढ़िया है। आर नेम इज प्रीटी गुड। क्या नाम है चैनल का? कार सॉर्स। तो भाई इनका वैसे कंटेंट अच्छा होता है अगर मैं आपको बताऊं। this thing is a 7-seat mid-sized SUV that costs less than $40,000. And check this out. First of all, check this out. You got pop-out door handles, and then AX7L है तो इसमें इसे ये वाला फीचर मिल रहा है, मेरी गाड़ी में नहीं है, so I can't relate to him. once you're inside, you're going to love this interior. Look at the detail of the perforation on these not even real leather seats. Let's turn this bad boy on, and you're going to notice these two really responsive screens. Is it any surprise that these dual screens are made by the same manufacturer for Mercedes? है? तो जो मेरी XUV700 में स्क्रीन है वो उसी मैन्युफैक्चरर ने बनाई है जिसने मर्सिडीज की स्क्रीन बनाई है। ये मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है ये बात, ये हमारे भाई साहब थोड़ा खराब बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता भाई अगर महिंद्रा ने ये करा होता तो वो इंडिया में चुप रहते। पता नहीं भाई क्या This is a little bit of a Mercedes rip-off though, but hey, I don't mind. It feels great. What's mind-blowing to me is that this thing is 40 grand. Check out 40 ग्रांड क्या बहुत कम होता है क्या ऑस्ट्रेलिया में? देखते हैं भाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 21,51,000 में इस बंदे को एक गाड़ी मिल रही है। तो भाई चुप रहे भाई, build of this thing बोला ना is genuinely fantastic. Not only is there so much room in the back, but look how easy it is to get into the third row. And before you think that they've cut costs on the engine, they haven't. This 2-litre 4-cylinder puts out as much power as a Mark V Golf GTI. And so इनके पास गाड़ियां भी डिफरेंट है ना थोड़ी कंपेयर करने को। Mark V Golf GTI हमारे इधर तो भाई ऐसी कोई गाड़ी आती थी तो हम तो बोल ही सकते। देखते हैं भाई बेस्ट चीप 7-सीटर इन ऑस्ट्रेलिया महिंद्रा XUV700 2023 रिव्यू। चलो भाई दिखाओ। This here is a 7-seat SUV that you need to pay attention to. If you're after a budget-friendly family hauler, this could be the right car for you. I'm going to tell you why in this review. It comes with a bunch of standard safety equipment. You'll see the price on the screen now, and there's a bunch of really good technology as well, including LED lighting around the car. You've got twin 10.25-inch screens. So you're after a budget, family-friendly 7-seater SUV. Well, there are some really good... बाहर की धूप कितनी सही लगती है ना वैसे, मतलब ऐसे एकदम ब्राइट सी। ये मुझे बहुत कूल लगता है बाहर का फीचर। मतलब इंडियंस बोलते हैं कि बाहर ये मतलब नेचर वेचर अच्छी है या कुछ अच्छा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे भाई थोड़ी धूप उधर की अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ी अलग सी लगती है। कितनी ब्राइट है ये देखो। तो बाकी तो भाई इंडिया ही बढ़िया मेरे ख्याल से। Good alternatives to this car. None of them are quite as affordable in terms of the starting price, but there are some really big name brands that you might also want to consider, including the Mitsubishi Outlander. You can get it as a 7-seater 2-wheel drive. It comes with a 2.5-litre petrol engine, so it does have a fair bit of punch, but not quite as much as this car. And then if you are also considering the Outlander, then you might want to also be looking at the Nissan X-Trail, which comes as an all-wheel drive with 7 seats for under 40 grand. X-Trail तो भाई इंडिया में 40+ लाख वाले आसपास के बजट में आएगी अगर आएगी। तो अगर हमारी गाड़ी जो कि 22-23 लाख की है वहां जाके उससे कम्पीट कर रही है, so it's a very big thing. I am proud of my Indian car maker. Efficiency देखते हैं भाई कितनी एवरेज आ रही है इस बंदे की। The official combined cycle fuel consumption figure for the XUV700 is 8.3 litres per 100 kilometres, which is not fantastic by class standards, but maybe it's also a little bit more realistic than some of the other sticker numbers on other mid-size SUVs out there. Look, I reckon that you might be able to 8.8 पर 100 किलोमीटर, तो 12 की एवरेज क्लेम करी है महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया में। मेरी तो भाई 7 की देती है। पर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी मतलब ट्रैफिक वगैरह कम होगा तो वहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ी हाई हो सकती है, पर यार दिक्कत ही है भाई इस गाड़ी में तो। और अच्छा वर्डिक्ट देखते हैं भाई इस बंदे का क्या वर्डिक्ट है। I reckon this 7-seat SUV could be a really good option for people who are willing to roll the dice on the Mahindra brand, because it's not necessarily the best known brand in Australia, but for what it offers, it is very impressive. Tell me what you think in the comments section below. Would you choose a Mahindra XUV700 or one of the alternatives I mentioned, or something completely different? I'd love to hear from you. If you haven't already, like and subscribe. तो मतलब बाहरी ब्रांड इतना रिकॉग्नाइज नहीं है उतना एज कम्पेयर टू बाकी। लेना है इस ब्रांड पे पैसे लगा के, जो कि मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल लो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो महिंद्रा बाहर की मार्केट में इस गाड़ी पे 7 साल की और अराउंड 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है स्टैंडर्ड। इंडिया में आपको 5 साल की और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी लेने के लिए एक्स्ट्रा अराउंड शायद 25,000 देने पड़ते हैं। वहां पे स्टैंडर्ड 7 साल की और 1.5 लाख किलोमीटर की है। तो भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? लो हमारी गाड़ी, हमें नहीं मिल रहा है ये सब जो तुम ले रहे हो। कार सॉस अगर आपको पता नहीं, जिसने बोला था कि
कि नाम अच्छा नहीं है इस गाड़ी का, देखते भाई ये बंदा क्या कह रहा है। और इन सब का जो ओपिनियन है बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये रिव्यूअर्स है, तो जो ये पोर्ट्रे करेंगे गाड़ी के बारे में ऑडियंस वही समझने वाली है। Hey man, what are we driving today? It's a Mahindra XUV700. A Mahindra? What's that? Oh, mate, I got no bloody idea. Well, Mahindra यार ये मेरे से रिव्यू को लग रहा है ये। have been in Australia for a while, but they've pretty much sold one car, and that's been the pickup, one of the quirkiest utes, which will be coming to the channel. So I know this is an early pitch, but you definitely want to subscribe for that. This, though, is their newest SUV, and this thing has to be the quirkiest car of the decade, more so than a Suzuki Ignis, you know, the 800 kilo SUV. This thing is super quirky, but not in a bad way. It comes with a lot, and it has really impressed, I think, both of us, man. Oh, absolutely. It's Yeah. blown me away. So today we're going to tell you all about it, just like we're going to tell you about our sponsor. Thank you to today's video sponsor, reasonably भैया जी की मैंने स्पॉन्सरशिप हटा दी भाई। स्पॉन्सरशिप के पैसे उन्हें मिले भाई, हमें थोड़ी मिले, मैं थोड़ी दिखाऊंगा। priced it is. This is the top of the range, being the AX7L, and that's under 40 grand drive away, which is really तो AX7L ऑस्ट्रेलिया में 22 लाख का है, मतलब 21,50,000 का, और ये ड्राइव अवे प्राइस है। तो अगर आपको नहीं पता, ड्राइव अवे जैसे इंडिया में ऑन रोड होता है, वहाँ पे ड्राइव अवे प्राइस होता है। तो इंडिया में ये वाली एग्जैक्ट गाड़ी ऑलमोस्ट अराउंड 29 लाख रुपीज की ऑटोमेटिक में। तो भाई तुम्हें 8 लाख रुपए सस्ती मिल रही है गाड़ी लिटरली हमारे खुद के देश से, और तुम्हें ज्यादा वारंटी मिल रही है स्टैंडर्ड इस गाड़ी पे। तो क्या चाहिए भाई तुम्हें। और ये मेरे ख्याल से महिंद्रा शायद इसलिए कर रहे हैं ताकि वो थोड़ी मार्केट को टेक ओवर कर पाए, और अपनी कार्स को सब्सिडाइज रेट पे बेच के थोड़ा ऐसे अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाए, और थोड़ा ऐसे बाद में फिर एक्सपैंड करे। तो मेरे ख्याल से यही उनकी थोड़ी ऐसी स्ट्रैटेजी वगैरह होगी। for a front wheel drive car like this that has quite a lot of power, they don't do a very good job. And I think if I was going to buy an XUV700, the first mod I would do to it is change out the tires, because apart from that, it drives pretty damn well. The mirror क्या भाई साहब को टायर्स अच्छे नहीं लगे भाई, इतने बढ़िया तो है, 18 इंच के अलॉयज है। तो चलो भाई अगर आपको यही महसूस होता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर भाई बढ़िया काम करते हैं। mirrors are auto folding, and you've also got कौन से वाले टायर्स 800. दिए The महिंद्रा बाहर? first mod I would do to अपोलो के it मेरे is ख्याल change out. एक सेकंड रुकना यार। हाँ अपोलो के है। तो यार ये तो बढ़िया टायर होते हैं भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। It's a very boxy design, but I kind of like it. Very in vogue at the moment. And it's got a decent enough floating roof design. Again, design is subjective. I don't think it's the most beautiful car on the road. But not a very beautiful car overall। यार ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे ऐसा रिव्यूअर है, थोड़ी बेइज्जती कर रहा है और थोड़ा जेन्युइन बोल रहा है, तो पता But it नहीं does क्या a pretty good job. It looks a little bit like a Nissan Pathfinder. A little bit. And some people No, not at all. It does not even look 1% like the Nissan Pathfinder. The Pathfinder looks much better, I would say. will love that. Let's check out the back. I'll tell you what, from the back is where you really notice that this thing is quite boxy, but that's decent for visibility. The only issue actually that we have with visibility, here's a little quirk for you, is that the middle seat in the rear, it is really large, so it actually blocks quite a lot of the visibility. I guess you could take that out. Look at these taillights, 3D effect to them here. You're gonna notice that the interior is a cream. It's very creamy. Well, it only comes in one spec. For now, they're hoping to bring different color options in future. So it looks great now, but you know, in a year's time when you got your family in here, it probably won't be this creamy. But that aside, it is a really nice place to be, like shockingly good, and it's quirky as all hell. See these two displays here, Jacob? I do see them. They're loud and clear. Loud and clear, crisp, color accurate. They work super well. They're actually manufactured by the same people who make the Mercedes displays. यार ये किसने बोला है कि जो महिंद्रा का मतलब डिस्प्ले XUV700 वाला वही है, मतलब उसी मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करा है जिसने मर्सिडीज का मैन्युफैक्चर करा है। XUV700 स्क्रीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मर्सिडीज मैन्युफैक्चरर। भाई ऐसा तो कोई है नहीं। अब अगर इन्हें ये इंफॉर्मेशन पता चली है तो शायद महिंद्रा ने बताई होगी, तभी ऑब्वियसली बोल रही है, तो मैं विश्वास कर लेता हूँ यार, मैं कुछ बोल नहीं रहा। Sound system, at least it's Sony branded, it's not very good. It's okay. It's definitely not a real Sony. I struggle to believe that it's developed by Sony, and if it is, they probably need to do a better job. But Mr. Carsauce, you are pretty much right in this. This is not developed by Sony. This is just using their brand name to amplify their car sales. तो मतलब ये अगर आपको नहीं पता तो सोनी का जो साउंड सिस्टम बोलते हैं, मैं भी नहीं मानता कि ये सोनी ने डेवलप करा है, ऐसे बस उनकी ब्रांडिंग है और शायद थोड़ी ट्विकिंग कर दी हो सॉफ्टवेयर वगैरह में, थोड़ा उसे एनहांस करने के लिए। तो हाँ, ये सोनी का नहीं है मेरे ख्याल से, ये सब फ्रॉड ही है। it's okay. You got speakers in the roof, so That's quirky. that is quirky. What else is quirky, Jacob? You know what else? I guess for your phone and a USB-C port. Probably would have been better if there were two. But that's okay. Also, this is interesting. I've just killed the passenger.
ram them into the front. No, that's a pretty cool feature of space in there. Like, it's genuinely quite impressive. So enough of the boring practical stuff. Let's drive it. Alright bro, it's time to launch the Mahindra. इसकी तो 10 की एवरेज आ रही है भाई। मेरी नहीं आती ऑब्वियसली इतनी भाई। अभी मैं गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही गया था मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। मेरी 5.5 की एवरेज दिखा रही थी, तो आधी आ रही है। XUV700 performance testing in 0 to 100 manual mode. It will auto upshift. It's just a bit more sporty. I found this meme. Oh, that's crazy. That is 1 millisecond faster than an MG ZST. That is an interesting fact. 9.89 seconds. That's okay. I would have expected a little bit better. अब देखते हैं भाई कमेंट्स क्या करे लोगों ने कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। महिंद्रा should price it at a premium, then all the features would be appreciated more. Seems like outside of India, everyone looks at price and tries to box it into a cheap car segment and forget to appreciate it. ठीक है, हाँ प्राइस ज्यादा कर सकते थे, पर ऑब्वियसली उन्हें मार्केट को थोड़ा ऐसे अभी कैप्चर करना है, तो इसलिए वो ऐसा कर नहीं रही है। एम कहेले तो भाई अपना इंडियन भाई लग रहा है। I actually loved this car on test drive. It feels so compact and that steering is surprisingly nice to hold. My only grips are the creamy interior and the lack of parcel cover for the boot. ये भाई श्याम छाबरा जी ने लिखा है, ये भी हमारा इंडियन ही है। It won't do any good in Australia. Australian dealers are used to charging 3 times the price. They won't handle it as their business is not geared for a price reduction. 3 times the price तो नहीं भाई, $1 लाख की थोड़ी बेच देंगे obviously. This thing is my dream. One day I'll have one. ये है विकास भाई। सारे इंडियन ही है क्या भाई? मुझे कोई ऑस्ट्रेलियन बंदा तो दिखाओ। ये लग रहा है भाई। Well, as you mentioned SsangYong, it is also owned by Mahindra. Yes, and one of the SsangYong units is owned by me, which is now no longer with me. I have sold it. जी का रिव्यू देख लेते हैं भाई एक बार, ये भी क्या कह रही है हमारी गाड़ी के बारे में। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। You're watching Cartel TV भाई and I'm Jenny. ये तो सुंदर आंटी है भाई। So let me tell you a bit about Mahindra. The company's admitted to some pretty important And the Nissan X-Trail. That sounds like a pretty ideal scenario. So let's see how it does. First off, this isn't a spaceship or anything. It's not out there, but it's tidy, contemporary, and fits well with. And then the highest spec one is automatic. The rear has some more curves and contours and also features LED tail lamps. And to cap it all off, you can choose from 5 different colors. For now, there is only one engine choice available under the bonnet. It's a 2-litre turbo GDI petrol वैसे engine. It's pretty impressive, providing a decent kick with maximum power output of 149.2 should allow for 720 kilometres of range. The drive really demonstrates a surprising blend of capable foldback feature. You have to remove it. That's something I have to point out. Fortunately, it doesn't have a foldback feature. You have to remove it. That's something I have to point out. Inside the XUV700, there's an impressive amount of gadgets and gizmos. They've even added this nice off-white. बढ़िया से बताओ भाई। As mentioned before, it also blocks your vision while driving. ये भाई ऑस्ट्रेलियंस को इसकी बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, हटा के दे दो महिंद्रा वालों। The boot ये is मेरी गाड़ी में तो है very ही नहीं मेरे ख्याल से। spacious, especially with the है third मेरी row गाड़ी down. में। Safety has been given paramount importance in the XUV700. It has key safety features like an automatic emergency braking, which I tested properly. They've also thrown in a blind view monitor that displays a blind spot camera feed Blind in the view center monitor of the हमारे वाले dash. में The तो है। XUV700 comes with up to 7 airbags. Comments बताओ। It's not a cheap car, my friend. Mahindra chief engineer Mr. Valusamy is determined to launch a product which is on par with German manufacturer and affordable to large buyers. ये भाई Unbox Global का। I own a Scorpio and I must say, boy, I am impressed with the reliability and ruggedness of the vehicle that Mahindra manufactures. Just can't wait to lay my hands on one of these beauties. अरे वाओ। Mahindra and Tata is the pride of India. ये भाई इंडियन होगा गारंटीड है भाई। ये रतन टाटा लव, रतन टाटा रिस्पेक्ट, 1 लाइक फॉर रतन टाटा। दिस इज बेस्ट वैल्यू कार। भाई ये तो इंडियन है भाई। ये भाई तुम सारे इंडियन ही हो क्या? बाहर के रिव्यू में भी कैसे से हो तुम? टारगेट ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअल ऑडियंस यू नो हु इट इज। इट्स स्टार्टिंग टू फील लाइक एक्चुअल टारगेटेड ऑडियंस इज अस। सही में यार भाई हम कुछ ज्यादा ही है भाई अपनी चीजों को लेके, ऐसे मतलब समझ रहे हो, दिल पे लगाते हैं। दिस कार इज इंस्पायर्ड बाय चीटा। इट हैज मोर देन 15 months वेटिंग पीरियड इन इंडिया। फॉर्चुनेटली दिस कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन माय होम town. Mahindra and Tata Motors are the pride of Indian tech and automobile world. Oh भाई साहब, you know the Jaguar, Land Rover and SsangYong also India brand now. This vehicle brand is way better than any Chinese made crap. The feature she's selling is too much for that price. More importantly for safety. तो भाई यही है भाई अभी तक की तो रिपोर्ट जो सारे लोग कह रहे हैं। अभी तक तो डिसेंटली अच्छी परफॉर्म कर रही है और ऑस्ट्रेलियंस के रिव्यूअर्स को भी और वहाँ के लोगों को भी पसंद आ रही है। हमारे इंडियंस को ज्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई ऐसी और रिएक्शन वाली वीडियोस तो बताना, और बाकी अरिस्टो कार को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कूल वीडियोस के